Welcome to the NSJD show, Pakistan's first fitness and self-improvement podcast, in which we discuss tools for self-improvement and physical and mental well-being. I'm Noroze, Sikander, Junaid, Dani, and I've been into fitness and bodybuilding since 14 years. Today's guest is Uloomi Karim Shaheen. Uloomi is an old friend from school, and he is a bantamweight MMA fighter. And he has quite a few titles to his name and a professional record of 10 wins and 6 losses. Out of these 10 wins, 6 were from TKO, technical knockout, यानी कि मुक्के मार मार के अगले बंदे को नॉकआउट करना या फिर रेफरी फाइट को रोक दे. एंड 3 ऑफ हिज विंस वर फ्रॉम सबमिशन, यानी कि चोक आउट करना या इस तरह की कोई चीज़ करना जिसमें अगला बंदा आपका ओपोनेंट सबमिट कर दे फाइट और रेफरी फाइट को रोक दे. And a few of his titles, or all of his titles actually, are number 1, he won the Matrix Fight Night. Number 2, he won a title in UGB MMA. Number 3, in VCL, that was held in Pakistan. And the 4th title belt that he has is in actually Muay Thai. तो आज हमने क्या बातचीत की? आज हमने बातचीत की कि भाई थाईलैंड में जो उलूमी आजकल है वहाँ पे क्या ट्रेनिंग हो रही है, हाउ दैट ट्रेनिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेनिंग दैट्स डन इन पाकिस्तान. थाईलैंड का वेदर कैसे डिफरेंट है फ्रॉम पाकिस्तान और वो ट्रेनिंग में क्या इफेक्ट ला रहा है उसके लिए. व्हाट आर हिज फ्यूचर प्लान्स रिटायरमेंट वाइज एंड अदर्स एज वेल, बिकॉज एज यू नो यू हैव टू रिटायर अ लिटिल अर्ली इन फाइटिंग एज़ कम्पेयर टू कोई कॉर्पोरेट जॉब या कुछ है, क्योंकि 60 साल की उम्र तक आप फाइट तो नहीं कर सकते. And we also talked about some of his stories around how he cut weight for a fight. क्या क्रेजी चीज़ें करनी पड़ी थी एक कम टाइम पीरियड में, किस तरह की डाइट फॉलो की थी to drastically cut weight for a fight. क्योंकि फ़ाइट में होता है ना कि आपको एक पर्टिकुलर वेट कैटेगरी में आना होता है, और अगर आप उस वेट कैटेगरी में नहीं हो तो या तो पेनल्टी पड़ती है, फिर either you can't fight. So we talked about that. We also talked about one crazy story from school in which फटा हुआ था और इस फटे में क्या हुआ था और उलूमी को कैसे इन्वॉल्व किया गया था और मैंने क्या सुना था और एक्चुअली में क्या हुआ था, और रियल लाइफ में कौन सा वाला मार्शल आर्ट है जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल है फॉर अस, और जिसकी यूटिलिटी सबसे ज़्यादा इन सेल्फ डिफेंस इन टर्म्स ऑफ और इन अकॉर्डिंग टू उलूमी's opinion. We also talked about one fight in which Uloomi looked like Uloomi शुरू में बस हारने लगा है, but things turned around. So, ये चीज़ें थी जो हमने आज डिस्कस की. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ मेक श्योर टू क्लिक ऑन द लाइक बटन. उससे होता क्या है कि यूट्यूब के एल्गोरिदम में ऐसा कुछ बना हुआ है कि यूट्यूब को लगता है वीडियो बड़ी अच्छी है और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाते हैं. उसके अलावा इफ़ यू गाइज आर लिसनिंग फ्रॉम अब्रॉड, then you can listen and watch this podcast on Spotify as well. And if you like the content in general, you want to hear more of such physical fitness, mental fitness and toughness and self-improvement stories and discussions going forward, please subscribe to the channel and make sure to watch all the videos जो पहले भी आ चुकी हैं उनको भी आप देख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है. And with that, let's jump to our conversation with Uloomi. Uloomi, what's up, man? It's all good. It's always been good. How have you been? How's Thailand? Thailand was amazing. It's always been good to me. Thailand's always been good to me. Thailand is like home away from home. Achha, so like when was the first time you went to Thailand? First time was 10 years ago. I think 2014. Yeah, 2014 was the first time I got sponsored. One of our, shout out to my sponsor, Diesel Diva. She came to Pakistan to work and she wanted to look for a place where she could train. She found us. She trained with us, and I was her only training partner because she was the first I think she was the first woman in Pakistan who started training mixed martial arts. This was 2010, 11, 12? 10, 11. She started training with us. I was the only training partner, and from there we had a good relation. She started sponsoring me. She wanted me to get out there and see how the world works and have a training camp with people better than us. And she sponsored everything. It was a fully sponsored camp in Phuket. And I went for 3 months, trained there, had 3 Muay Thai fights, won all of them. Alhamdulillah, did all great. And then my journey started. Like Thailand then kept on calling me back. She was from Thailand basically? No, she's Canadian. Oh, okay. She's a Canadian. She's a revert. Her Muslim name is Aisha. Achha. But her real name is Beverly Roach. So now she's Beverly Aisha.
So how come she came to like Pakistan straight for talent here? She had some work. She Acha. used to work with some company. I don't remember what it was, or maybe I don't want to say it. So she came here for work and she wanted to train. She had been training in Thailand for a while, and she see a blonde lady with abs. She comes in. She says, I want to train mixed martial arts with you guys. And we just, okay, wow. Acha, This woman. Well, I mean, we never had abs. We didn't have. None of us had abs at that time. We looked at her and like, we need to learn something from her. Right. So at the time, your Fight Fortress tha, was it like there? Fight Fortress was there because Fight Fortress started in 2008 में हमने formally Fight Fortress start किया. अच्छा, सही. It started 2006-07, but we didn't have the name Fight Fortress. We were just training. अच्छा. But Fight Fortress, the name came in around 2008, 2009. Right. And then I think she was on one championship summit. There was when one championship had this event for athletes to socialize with sponsors and socialize with people. She met Bashir Bhai there. Bashir Ahmed. And she said, I'm going to Islamabad. So Bashir Bhai recommended, said, I have friends in Islamabad. You can go and train with them. They're legit MMA guys. And he basically referred her to us. And that's how she found us. Acha. So that was your first trip to Thailand? That was my first ever trip to Thailand. Right. I fought Muay Thai again 3 times. Won all of them by knockouts. That was like a role for me. Acha. Also shout out to, I'm representing her tribe. So she has this brand of perfumes. You call it the Tribe Diesel Diva. That's her basically brand name, Diesel Diva. And anyone who buys the perfume, the money goes to kids basically, and their gyms in Brazil. So there's underprivileged kids who she does not want to go. She keeps them away from the street life in Brazil. We all know it's pretty hard, pretty rough. So she wants to keep them away from the streets and give them a chance to live a better life. And so she has multiple gyms. She sponsors multiple gyms in Brazil, and she funds all these kids from the money that comes from the perfume. Acha, sahi. So you were telling me that you went to Thailand like abhi 2 years back, right? When I went in 2019, that's when I got signed with Fairtex. Okay. And then COVID happened. Yeah. And right after that, they were like, we want you back, come back as soon as possible. And we did everything we could. And I got back in 2022. Yeah, right. 2021, I tried to get back. I had some complications. And then 2022, we finally did it. And 2022, February was when I moved to Thailand. Acha. So exactly 2 years ago. Exactly 2 years ago. Right. So you want to stay there right now? What are your plans? I have been there for the past 2 years working with Fairtex, training under Fairtex, training people at Fairtex. I was the strength and conditioning coach and the MMA head coach there. So it's pretty like, I now feel that, I've lived in Thailand for as long as I wanted to. Maybe now I want to make a move to some other place. Let's see how things work out. Right. We all have plans, but then Allah is the best planner of them all. So, whatever way it goes. Sahi. तो वहाँ पे जाके the training that you've been doing, I've been like watching it here and there. कभी TikTok पे, तो कभी Insta पे. तो वहाँ की training जो हो रही है, जो यहाँ पे training हो रही थी, क्या फर्क है main? फर्क ऐसा कुछ नहीं है. अच्छा. Techniques का कोई फर्क नहीं है. I personally think कि जो थाई स्टाइल है स्ट्राइकिंग का मुए थाई जो है वो ट्रेडिशनल और टिपिकल उसको अभी तक उन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है कि आई थिंक 50s 60s 70s 80s में जो स्टाइल था उसको वही रखा हुआ है. कुछ थाइज हैं जो इवॉल्व कर गए हैं जो कि बिकॉज ऑब्वियसली न्यू एज फॉरेनर्स जो हैं वो लड़ने के लिए हैं लड़ने आते हैं थाईलैंड में. इट्स अ प्लेस वेयर एवरीवन सेज दैट इज द प्लेस वी वांट टू गो टेस्ट आवरसेल्फ. सो दैट इज दे कॉल इट द मेका ऑफ मुए थाई. तो लुम्पिनी स्टेडियम में आते हैं वहाँ पे लड़ने के लिए. दैट्स लाइक द मोस्ट प्रेस्टिजियस स्टेडियम इन द वर्ल्ड फॉर मुए थाई. एवरीबडी वांट्स टू कम एंड फाइट. एवरीबडी वांट्स टू फाइट इन थाईलैंड. सो एवरीवन हैज इवॉल्व्ड. Some of the Thais, they stick to that, the similar basic old school Thai style. तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो that style, I mean, whatever we do in Pakistan, the striking style is way advanced. We think like हाँ हम लोग बहुत आगे के सोचते हैं. We think about patterns, we think about a curriculum. एक चीज़ को हम properly design हुआ होता है. Like this is what I've learned from Coach Sham at Fight Fortress के ये हमारे curriculum है. अभी हमने इस पे काम करना है. Basic ये है, intermediate ये है, advanced ये है. फिर उससे जो है ना expert level पे जो है ना ये चीज़ें आती हैं.
वहाँ पे सच इतना कुछ नहीं है. Thailand is more like you hit pads, you hit the bag, you learn a couple of techniques and then you just go fight. Striking wise यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा I feel कि जो मेरी improvements आई हैं वो यहीं पे आई हैं. But एक काम का environment है वहाँ पे. When you're about work, you're all about work. You have no distractions, घर की कोई टेंशन नहीं है. I always say this, कोई दही और धनिया और दूध सब्जी कुछ नहीं लेके आना. तो अभी भी like I'm back and I have to like drive everyone around. कि अच्छा फलाने को उधर ड्रॉप करना है, इसको उधर से पिक करना है, ये करना है, वो करना है. So I have that at the back of my mind all the time. But when I was in Thailand, I was like, okay, go back to my room, take a shower, eat, sleep, wake up, go to training, come back, shower, eat, take a nap, and then the same cycle repeats every single day. So you're just focused on that. वो एक डिफरेंस है. बाकी अगर टेक्निकली रेसलिंग और ग्रैपलिंग की बात की जाए तो ऑब्वियसली दुनिया भर के लोग वहीं पे आ रहे हैं. एवरीवन फ्रॉम द वेस्ट आर कमिंग टू थाईलैंड टू ट्रेन because of the weather, because of Muay Thai, because of the environment that there is, and it's cheap to live for those people especially. What about the weather? Weather is like Karachi, but less humid. Okay. It's a very pleasant weather. अभी जब मैं उधर जहाज में बैठा मेरे पसीने छूट रहे थे, तो यहाँ उतरा तो हालत ही ख़राब हो गई. So I was like, even though I had that in mind, I thought कि इतना कोई फ़र्क नहीं होगा, but there was a significant difference. उनका बस एक, it's a tropical rainforest, तो एक ही मौसम होता है. हाँ, थोड़ी बहुत जब winters आते हैं, थोड़ा सा ठंड होती है, तो temperature drops to 24, 25. Other than that, it's like 30 plus, 33 plus. मोस्टली बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं है जो हमारी आती है. नहीं उनके 4 मौसम नहीं है. अच्छा. They don't have four seasons. हमारी तरह का वो सीन नहीं है. अच्छा यार, तो जब यहाँ पे ट्रेन कर रहे होते हो, जब ठंड होती है तो ठंड में हमें कोई जोर से ताली मारे, हम कहते हैं वो ये लगी है. तो अभी कैसे होता है? Like I told you, I just came from training. Yeah. और दिन के 1 बजे हमने ट्रेन किया. फिर भी ठंड लग रही थी. On the mats were cold. तो सॉक्स पहने हुए हैं, ट्राउजर्स पहने हुए हैं, वो कपड़े पूरे पहन के वार्म अप किया, उसके बाद कपड़े उतार, वो ठंड लगती है. तो it's really difficult क्योंकि वार्म अप करना भी एक अजाब बन जाता है. But then again we have to like live with it. हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है कि यार अंदर बिल्डिंग के अंदर सेंट्रल हीटिंग होगी तो हम सब उसका इशू नहीं होगा. We have to live with that and I think this is important too. ये जो है माइंडसेट देता है एक सर्वाइवल मोड में हमें लेके आता है. So this is I think the most important thing कि इतनी ठंड में भी जीरो भी हो जाए, फ्रीजिंग पॉइंट हो, माइनस में बेशक चला जाए, we're still going to do the same thing. So that kind of like instills the discipline in our head कि जितनी भी ठंड हो, जो मर्जी हो, करना आपने वही है. You have to do this. There's no going away. There's no escaping this. So it does get difficult. ज़ाहिर है ताली क्या कोई पास से गुजरता ठंड लगती है, you start shivering, but then we have to do it. We have to live with it. फिर इसके बाद जब एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में फाइट करना हो तो it seems a little easier कि इतनी मुश्किल में किया हुआ ट्रेन. It's very easy. To be honest, वैसे भी fighting is the easiest part क्योंकि सारी जो टॉर्चर होता है वो ट्रेनिंग में ही होती है. You go through all of that torture, you get stuck in a position, आपको इंजरीज हैं, आपको भूख लगी है, आपको प्यास लग रही है, आपको पसीने आ रहे हैं, अगले का वेट ज़्यादा, आप वेट कट कर रहे हो, अगला जो है ना खा पी के आया हुआ है. there's multiple things, multiple factors जो कि जो है ना वेट में आपसे ज़्यादा है. ऑब्वियसली अगर स्ट्रेंथ को जो है ना आपको पता है आपका अपोनेंट आपसे स्ट्रांग है. Okay, this guy is a good wrestler, he's strong, so he's going to push you to the limits. What we personally do is we wrestle or grapple with a guy who's the strongest and who is big in size. तो obviously उसमें ज़्यादा strength होगी. So we have to fight against that. I am cutting weight. वो खा पी के समोसे खा के तके खा के आ रहा है मज़े में आके जो है ना he's like steamrolling me और मैं यहाँ पे I'm cutting weight as well and I'm trying to survive in there. And when all of that happens, when we go in the fight, because at the back of the head we know I've put in all that work, then everything gets easy. Then we don't worry about anything. Yeah, I've sparred and trained with the biggest guy, with the toughest guy, with the strongest guy, with the most technical guy in the country. What's the worst thing that's going to happen to me? So that gives us extra confidence when we go in there to fight. Yeah. Weight cutting, what's the craziest thing that you've done for a fight? What crazy weight cut? My title fight, जो MFN में मैं last year लड़ा था. Actually, year and a half ago. 2022 के end में जो लड़ा in Dubai. I had a fight 3 months before that fight. So I was supposed to fight in September. उसके बाद I was supposed to fight in November. So October के end में August के end में मुझे क्योंकि September शुरू में fight 2nd 3rd September को था तो end में जो है ना my right arm stopped working. So I consulted my physio. He said you've probably slept on it and कोई nerve होती है जिसको जो है ना you've like slept really hard on it. You've slept for a very long time on it तो वो numb हो गई है.
मैं अपना हाथ कर्ल नहीं कर सकता था. Like I पानी तो दूर की बात है, 500 ml की बॉटल भी नहीं उठा सकता था. I couldn't curl my just normal bicep curl. Was it not responding? It was not. It was just hanging, dangling. Yeah. And it was just going like इतना थोड़ा सा ऊपर और उसके बाद खुद ही गिर रहा था. अच्छा. So I remember it was a Tuesday. We had sparring, and this was like the week before the fight. So this was the last week of sparring for me, and I was sparring with a really like jacked guy at our gym. He was really good. So I had both my hands up. I knew he was going to throw the right hand. I saw it coming. I blocked here. He punched this hand और ये हाथ मेरा यूं उड़ा. I was like, wait a second, what happened? Then I realized कि ये वही हुआ है, because grapple करते हुए मेरा हाथ ज़्यादा काम नहीं करता. So I understood कि okay, it's kicking in again. And the guy looked at me, he's like, bro, you okay? I'm like, yeah, I'm fine. ऊपर करने की कोशिश की नहीं हुआ. So I used my other hand. I kept my hand here, and then it fell down. दोबारा से मैंने हाथ ही दो दफा गिरा. Then I did Mike Tyson style peekaboo की तरह. I bit on my glove and I just kept it here. It's like, no. It's like, bro, I'm not going to punch you in the face like that. तो हमारे जो FedEx के big boss हैं, वो बैठे होते हैं. He watches everything. एक वो उसकी टेनिस का जो रेफरी होता है उस तरह उसकी एक सीट लगाई होती है. अच्छा. और उसके ऊपर जो है ना वो बैठ के सबको देख रहे होते हैं. He has a mic connected, which is like speakers are all around the gym. And he tells नाम लेके specifically, you kick hard, you punch hard, जोर से मारो. ये कौन सी academy है? This is FedEx. अच्छा, FedEx में ये होता है. अच्छा. The boss is watching everyone, how they are training, and he's pushing everyone. ठीक है. So he saw that the guy's not punching me. He's like, the guy's name was Kwangtung, punch him hard. And he punched me again. I blocked here. He's like, punch from the left hand. I'm like, go ahead. I tried to like do whatever I could. Yeah. लेकिन फिर वो एक पिदन से पीछे मुड़ा. उसने बॉस को, वही थाई में बोला कि इसका दूसरा हाथ नहीं चल रहा. तो बॉस मुझे बुलाया, कहते हैं क्या हुआ है. Like, I don't know, the arm's not working. It's like, go get it checked. So मैं gloves उतारे बाहर गया. I went a little to the side. I wanted to drink water. I couldn't pick the bottle up. मुझे हंसी भी आ रही, रोना भी आ रहा है, क्या हो रहा है. This is like 1 week before the fight. So I went to a physio. उसने भी यही कहा कि कुछ like I saw another physio. He said you have pinched some nerve here. You've slept wrong. I was like, yeah, I slept on my right side, and it like I woke up and I felt that it's not working. मुझे लगा वो sleep paralysis type हो गया है. ठीक है, सही हो जाएगा. तो कहते कितने दिन हुए. मैंने कहा 2-3 दिन हो गए. It's like if it's prolonged, that means it's bad. So I was like, well, I have a fight next week. So he's like, I'll give you an injection. If it works, okay. If it doesn't, then you have to pull out of the fight. So long story short, it didn't work. They gave me 2 injections, didn't work. 3 days before the fight, I pulled out of the fight, and this is the first time ever I pulled out of a fight in my life. I felt like I've let myself down. I've let everyone down. इतना मुझे बुरा feel हुआ. I've never felt so bad in my life ever. And I started binging on donuts. After every day I would eat 14-15 donuts. तो 10 दिन में लगातार कोई 150 डोनट खाए. And then my weight shot up to, because I was on a cut. I cut down from 76 to 68. I just had 2 more kilos, जो कि water weight मैंने cut करना था. 68 से like 8 kilos मैंने cut किया, all clean. And right after that, when that happened, I just started eating donuts, and my weight shot up to 86.7 kilos. My ankles started swelling. मुझे feel हो रहा था liver में issue हो रहा है. My liver is not responding really well. How did you know that? Because like I could feel that, you know, like when you have so much control over your body, you start feeling okay, something is wrong with my body. And थोड़ा बहुत इतना अंदाजा मुझे हो जाता है कि यार किडनी का issue है, liver में issue हो रहा है. Because when my ankle started swelling, I was like, okay, my liver is not able to, you know, control whatever is going in the body. फिर मुझे समझ आया कि यार 3 हफ्ते मैंने इतना extensive cut करने के लिए I did a, you know, crash diet type scene किया है, और उसके बाद अभी एकदम से मैंने उसको इतना ज़्यादा sugar feed किया है. So obviously it's not able to process all of that all at once. So I went 86.7. I knew I was supposed to fight in November for the title. So October आ गया, and पूरा September का महीना मैंने ज़ाया कर दिया, like dwelling and crying about it. Oh, I pulled out of a fight. I'm such a weak ass, and ये तो वो. फिर मुझे याद आया यार अगले महीने तो मेरी fight है. I have like 5 weeks for a fight. And what about your arm? वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गया? Arm तो फिर ठीक हो गया, हाँ. अच्छा. The arm got better after 2 weeks. Like without physio? Without the physio. Okay. Without the physio. Okay. It was the nerve. He said कि थोड़ा बहुत उसको बस move करो, जिस तरह flies वगैरह करो, थोड़ा bicep curls type करो without any weight. अच्छा. And then test करते रहो. सही. So I did all of that. It worked. But then my weight shot up to 86.7, and I was like, okay, now I have 2 challenges in front of me.
Pehla, it's India versus Pakistan in an Indian promotion, fighting for a title belt. And I am fighting their superstar in their promotion. And secondly, I have to, get rid of all this weight because I've never missed weight in my life. So मैंने कहा ये तो challenge हो गया. So 86.5 से within 5 weeks, I dropped down to 61.3. So I made weight. I got on scale. I was 61.3. That is when I was like, now I've won the fight. That is when I said I'm winning the fight. So 24 kg. Almost 25.4. In how many weeks? 5 weeks. किस तरह क्या किया था? I went for Dolce Diet. Okay. Dolce Diet की एक book है. अच्छा. For fighters and weight cutting. So that I bought, downloaded. I started going through it. I read all of it in 2 days. Yaar, how does this work? Even though I had my nutritionist, shout out to Elite Nutritionist, she was always pushing me. No, you need to eat this. You need to do this, do that, do this, do that, because she was a coach at Fairtex. So she knew how my body works. She kept on telling me, but again, if you don't want to listen to someone, obviously lose time pay, your brain doesn't really accept things. You say, हाँ ठीक है, okay, I'll do it. I started listening to her, but then I was like, you know what, I knew that I could push myself more, and I knew that if I go so easy on myself, it's not going to happen. Yeah. I started killing myself with that. But then again, I figured out कि Dolce Diet के जब मैंने diet करना शुरू कर लिया, I figured out कि it looks like it's not as nutritious, but there was like days when I was eating steaks and all, like pura beef steak, 500 gram steaks, and I'm like, wait, how is this going to help me cut weight? I was like, okay, no, this has happened. A lot of guys have experimented this. A lot of guys have, utilized this system, and they've made weight. I'm going to do the same. And when my weight started dropping like really fast, that's when I realized I'm going to make weight. Then my weight got stuck at 71 kilos. अच्छा. फिर वहाँ पे मैंने water loading शुरू किया. I knew I was around 67, 68 again, but I started water loading, went up to 71. Flew to Dubai from Thailand. It was a 6.5 hour flight. When I landed again, my ankles started swelling because of the long flight. Or I remember that day I had loaded 12 liters of water because we load water in the body, so it gets used to getting rid of the water from the body. So उसमें फिर I went around 72 point something. फिर आहिस्ता आहिस्ता जब water intake कम हुआ और जो है ना साथ because I was doing hot tub every night. So I would sit in a hot tub for almost 30 minutes, 5 minutes here, 5 minutes till the chest, 5 minutes till the belly button, इस तरह 5 minutes करते करते. अच्छा. So that was getting me used to and acclimated to the heat that I had to go through in the final cut. Like the hot tub filled with hot water? Hot water, okay. Nothing else. A lot of people say add salt and this and that. It doesn't matter. Achha. You sit in hot water. Within 5 minutes, actually within 2 minutes, you'll start feeling that you're sweating like crazy. And I sweat a lot from my head. तो जैसे obviously it's a bald head. जैसे ऊपर से पसीना आना शुरू होता है सबके तो बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है परेशान हो जाते हैं. अच्छा. So that happened. Coach Etisham was there. Ayub Khan, one of our teammates, he was in Dubai. So he helped me a lot with the weight cut. And that was like the biggest cut I've ever done. So that was almost 10 kilos of water weight. 10 kilos of water weight 10 alone. kilos of water weight. Oh shit. अच्छा. तो Dolce Diet में what is the premise like? Basically क्या होता है? क्या खाना है? क्या नहीं खाना? Basically what like so उनका होता है कि like I'll just tell you like the basic things how it works. They don't any diet, especially for combat sport, वो लोग कहते हैं यार carbs हटा दो. People say, oh, don't eat carbs, it's gonna get you fat. No, it's not. Right? So what he does is, or any nutritionist does is, they say eat foods that are low in calories, but since you're a combat sport athlete, you need to have carbs. So based on your body weight, they tell you how many grams of carbs you need, how many grams of protein you need, and fats you need. Dolce Diet is too heavy, or he's more focused on protein and fat. He's like, take your carbs from whatever, like जो प्रोटीन के अंदर जो प्रोटीन सोर्स के अंदर जो कार्ब्स हैं, फैट सोर्सेज के अंदर जो कार्ब्स हैं, उसके अलावा सुबह आप जो है ना अपना एक वो ले लो कार्ब्स के लिए जो लेट्स से ओट मील लिया, ओट ब्रांड फॉर एग्जांपल, बट देन ऐड सम ग्रीक योगर्ट टू इट, ब्लूबेरीज डालो ताकि थोड़ा सा आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिले बॉडी को. सो इज लाइक मोर न्यूट्रिशन टू द बॉडी, सो योर बॉडी इज यूज्ड टू बर्निंग एंड प्रोसेसिंग बेटर. एंड राइट आफ्टर दैट, देन आफ्टर 2-3 days या तो आप जो है ना
चीज़ें चेंज कर लेते हो, you fast in the morning and then you know take a salad at night, that drop कर देता है. फिर उसके 3-4 दिन बाद आप, like I said, steak. So that's like giving your bodies high and low, high and low. Right. So with that, I think that's the one diet routine that has always worked for me. इसके अलावा the nutritionist of mine that I mentioned, she, you know, at the very end of my camp, because MFN people in the MFN were making me cut weight almost every day. They were like, oh, up weight 10 kilo दूर है, you need to give us weight every day. So Wednesday, Tuesday I reached, I had to give them weight. अच्छा. दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि आप हर रोज weight दें, और they just say if you're not on weight on scale on the Wednesday, या तो आपका fight purse कटेगा, या तो आप जो है ना fight नहीं कर सकेंगे. I told them that. They're like, नहीं, we have our own rules. आपने under 5 kilo की bracket में आना है. So I was 71, I cut down to 65 point something. And फिर Wednesday को उन्होंने फिर weight मांगा सुबह. So Tuesday night I gave him 65 point something, and then I contacted my nutrition. I'm like, this is happening, because this was something unusual for me. And there was nothing related to this condition or this situation in the book. तो मैंने पूरी book छान मारी, यार कुछ नहीं मिल रहा, मैं क्या करूँ? So I resorted back to my nutritionist. I was like, what do I do? And she was really patient enough to say, okay, now drink enough water, load करो. मैंने कहा तब मैं load कर चुका हूँ already. She's like, doesn't matter, load this, eat this, do this and relax. So obviously I was really stressed. यार, it's for a title fight. और first time history में किसी Indian promotion में कोई पाकिस्तानी आ रहा है जिसको इतनी बड़ी fight मिल रही है. तो I didn't want to, and I never want to be off weight. So I was like all crazy and all. तो बस जैसा तैसा करके I made weight. Stuck to whatever my nutritionist told me. I was like, okay, I'm going to do this. And then I made weight and everything was good. Nice. So Dolce Diet, as I understand, it's like a mixture of a little bit of keto, carbs low hai, but like a good carb source in the beginning of the day. Yeah. And then like it's not consistent. It's like a little, kabhi high hai, kabhi low hai. So what like I told you, the breakfast. Yeah. So he says add mixed berries, blueberries, just to add like थोड़ा बहुत like slight आपको source of carbs जो है ना मिलता रहता है, intake मिलता रहता है. लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ा कोई like a bowl of rice or something. A lot of nutritionists I know that they say again they do calculated stuff. This guy, like in the book that I read, it didn't say anything. उसमें सिर्फ ये था कि इतना ग्राम आपने intake करना है. So there was nothing related to if you fight in this weight class you should take itna gram. Body के लिहाज से नहीं था. But then again, when it's placebo as well, when you believe in something so much, it works out. Now I've seen and worked with a lot of nutritionists who say, what's your body weight right now? And I'm like 76, 77. Okay, you need to, so they make a calculation, they say, eat this much of all of this kind of food. अब जो है ना change है. But yes, Dolce के ये system, लेकिन उसका hard and fast थोड़ा सा है कि अच्छा सुबह आपने oatmeal लिया, उसके ऊपर फिर आपने black coffee पी, फिर breakfast के बाद जो है ना you had an apple or a pear with green tea. फिर उसके बाद आपने आफ्टरनून स्नैक लिया, उसमें had like a quarter an avocado, half an avocado with an orange and green tea. फिर इसी तरह जो है ना लंच है, लंच में you keep asparagus, spinach, you know, सब्जियां heavy रखता है. उसके बाद डिनर में either it's fish, फिर वही fat and protein, या तो आप चिकन के साथ जो है asparagus and capsicum and all of that. तो फिर इसी चीज़ों में थोड़ा बहुत जो है उसकी changing आ जाती है. Lots of veggies, green tea, coffee. And so when you were doing this, did you feel that you're losing strength and performance in your MMA? No. That was consistent. That's pretty cool. Because I personally feel that how it works for me is as long as I keep my protein intake the way I feel it should be. Yeah. Then everything is perfect. I drop the carb level, थोड़ा सा मुझे feel होता है energy level में low हो गया. But then again, fats help me recover on that. I don't know how my body works. I'll have to ask my nutritionist again. Yeah. But then again, carbs का source normal day पे जब मैं like over this like since the last year 30 cross करने के बाद मेरी body में काफी changes आए हैं. मुझे feel हो रहा है कि the more carbs I take, the sloppier I get now. Acha. So I keep the amount of carbs. Even breakfast, sometimes I skip breakfast. I'm like, I don't need it. 1 meal a day का लेता हूँ. और उसमें भी बहुत ही जो है ना mediocre किस्म के carbs रखना शुरू कर दिया मैंने. So you feel sluggish बहुत ज़्यादा carbs खा के. I feel really slow. अच्छा. Because I remember
थाईलैंड में क्योंकि अनीता ब्रेकफास्ट बनाती है हमारे लिए, राइट? सो शी इज लाइक, भाई जी क्या खाएंगे? अंडा पराठा किसी दिन दिल किया तो अंडा पराठा बना लिया. द डे आई ईट अंडा पराठा, आई एम लाइक, ओके दिस इज बैड, आई डोंट लाइक दिस, because I'm not able to train the entire day. Even if I train, I am really slow, sloppy. My brain is not like brain fog हो जाता है. बट उसमें तो वो भी है ना, लाइक घी शी में बनता है, फैट भी है, जिससे यू गेट स्लॉपी, राइट? नहीं. So for me, because I tell, जब थाईलैंड में अनीता को बोलता हूँ कि यूज इधर कोकोनट ऑयल और एवोकाडो ऑयल, और बहुत ही थोड़ा यूज करना है, लाइक 1 teaspoon. ओह ओके. और I bought that spray thing. तो उस बॉटल में डालते हैं, स्प्रे किया, उसी में बनाया. So it's like a खुश्क पराठा. It's a खुश्क पराठा kind of thing. हाँ. And eggs भी इसी तरह के, वो उसको थोड़ा सा she adds water और उसके अंदर कुछ बनाती है और प्याज टमाटर कुछ डाल के फिर उसको दम पे लगाती है, और I don't know. अच्छा. This is a weird way to do it, but it tastes so good. It tastes so good. तो I mean oil minimum use है. Like I remember के आई फील कि मैंने शायद थाईलैंड में 2 साल में जितना ऑयल यूज़ किया है उतना शायद पिछले 1 हफ्ते में जब से आया हूँ पाकिस्तान में इतना मैंने खाया होगा. अच्छा. सो इट्स वेरी डिफरेंट देयर. सही. लाइक because I tell Anita, क्योंकि अनीता भी है, I want her to not be too far off of weight, because I know for girls it's going to be really difficult to lose the weight, to get rid of the weight that they gain. Or one championship में अनीता, when she fights, there is no hard weight cuts allowed. तो आपका हाइड्रेशन टेस्ट करते हैं, अगर हाइड्रेशन फेल हो गया तो कहते हैं भाई दोबारा हाइड्रेट करके आओ, यू शुड बी ऑन वेट एंड हाइड्रेटेड. ओह ओके. तो अब ये फिर जिसकी वजह से दे हैव टू स्टे एज क्लोज टू द वेट, द फाइटिंग वेट एज पॉसिबल. सो आई डोंट टेक एनी चांसेस विद दैट, ना अपने लिए ना फॉर हर, एंड आई टेल हर टू यूज मिनिमल ऑयल. तो मतलब ऑयल का वो नहीं है कि ऑयल का सवाल पैदा नहीं होता. बेसिकली कार्ब्स ही है मेनली. It's carbs. हाँ. I felt that sometimes I feel that paratha is too much for me. थोड़ा सा चावल खा लिए बस काफी है. Carbs, if I take them like post training, I feel that it helps me recover better. प्री ट्रेनिंग अगर करता हूँ तो बिल्कुल मैं नहीं कर सकता. अच्छा, दैट्स इंटरेस्टिंग. क्योंकि हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं ना कि यार कार्ब्स गिव यू एनर्जी, प्री वर्कआउट मील में कार्ब्स खाओ और ये करो. बट I can kind of relate with that कि there's Andrew Huberman, if you've seen him, his podcast on YouTube, तो वो ये बात करता है कि हमें बताया जाता है कि like food gives you energy, eat lots of it to get energy, but हम जब ज़्यादा खाना खाते हैं हमें सुस्ती हो जाती है. Exactly. And then exercise is supposed to tire you out, but if we exercise, बहुत चलो crazy MMA अगर नहीं भी कर रहे हैं, we just do a little activity, a little bit of cardio, a little bit of weight training, we feel more energized. More energetic, exactly. So it works kind of like in the opposite way. It's not, there's no theoretical scientific evidence कि ये exactly ऐसे होता है, but it does happen कि ना आप बहुत ज़्यादा खाना खाओ तो sluggish हो जाओगे और exercise करो तो active हो जाओगे. Of course, and मेरे ख्याल से हमारे culture में we do this because parents don't want their kids to be undernourished or malnourished. राइट. वो कहते हैं बेटा ज़्यादा खाना खाओ, देखो अगला कितना सेहतमंद है, तुम कितने पतले हो, कमज़ोर. पतला उनको लगता है कि इज वीक. हाँ. जितना मोटा होगा उनको लगता है वो हेल्दी है. सेहतमंद हो गया, हेल्दी हो गया. शादी कर ली तुम, सेहत अच्छी होगी, सेहत अच्छी, मोटा हो गया. सो आई थिंक इस कॉन्सेप्ट की वजह से ये चीज़ हमारे अंदर एक इंग्रेव हो गई है कि यस दिस थिंग वी नीड टू ईट अ लॉट. I personally feel कि सुबह सवेरे, like the first thing in the morning when I train, I wake up, I go to train, I don't eat, I come back, I feel super energetic. यहाँ पे भी ये होता है कि सुबह मैं ट्रेन नहीं करता हूँ, दिन भर थोड़ा सा एनर्जी ऑफ रहती है, लेकिन उसके बाद when I train at night, I go lift in the evening, पूरी रात मैं जो ना I have energy. On my way back home, I'm so energetic, ऐसा लगता है बस मैं I can go fight right now. Yeah. So I know what I mean. I can understand, and because I feel that personally, I know that this is how my body works too. And I think if my body works this way, it means काफी लोगों की body ऐसे काम करती होगी. And I'm sure, like you mentioned, Andrew Huberman, he's a genius when it comes to this. If he said it, it means there's some sort of study behind it, and to back it up. Yeah. And so when do you आजकल are you training fasted in the morning? हाँ. Acha, so you're doing MMA fasted? Yeah. Acha. But so what's do you happening? Have, like, coffee and stuff. What's happening here right now is we train around 1 p.m. with the team. I just started today. इससे पहले I was trying to like
फिक्स क्या रूटीन्स क्या हैं, कौन क्या किस टाइम कर रहा है, ट्राइंग टू नो कि ओके हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर मी टू कम्यूट, क्या है, कितना है डिस्टेंस, क्या है, और फिर व्हाट टाइम विल आई गेट हियर, व्हाट टाइम डू अदर पीपल यू नो इन माई हाउस, व्हाट टाइम डू दे हैव ट्रेनिंग्स ऑन दीज डेज ऑफ द वीक, सो आई कैन manage and coordinate my time accordingly. तो आज I had breakfast and I didn't feel so good. My gut feeling was telling me something, कुछ बता रही थी. I was like, yeah, whatever. I went, had breakfast. फिर मैंने कहा यार, you know what, let's go train. And then I'm like, oh, this is what my gut feeling was telling me. Don't eat because you have to go train today. Achha. And then when I trained, I was done. I was like, this is the worst day of my life in training. अच्छा. Because obviously एक साल पूरा मैंने अपनी बॉडी को एक चीज़ पलाइन किया हुआ है. I wake up, I drink a bit of water, so around half a liter of water with 1000 mg of vitamin C, and उसके बाद then I go train. I drink around 3.5 liters of water, like a gallon of water every day. सुबह की ट्रेनिंग में 1 gallon of water, दोपहर को ट्रेनिंग में कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है, so almost 6 to 8 liters of water intake. दोपहर को I don't eat anything. हल्का फुल्का अगर कुछ खा लिया, let's say I have an apple with green tea to, you know, it helps me take a nap, like a good nap, 30 minutes and I'm done. If it goes beyond 30 minutes, फिर मुझे वही ऐसा लगता है कि मैं कितने ज़्यादा carbs खा लिए. So my routine in Thailand is if I sometimes I have breakfast, oat bran. When I'm low on energy, I feel like okay, low on energy, have some oat bran, some Greek yogurt, ऊपर थोड़े frozen blueberries डाल दिए. That's my breakfast. Uske baad have some green tea with it. No coffee until 2 p.m. So right. 2 p.m. I have some coffee because 2:30 we have to go train. तो उसके बाद फिर 2:30 to 5:15 तक we train. फिर वापस आया, dinner किया, which is going to be a good Pakistani dinner. Either have some sort of kadai with almost no oil, or have some biryani, pulao, कुछ ना कुछ पकाती. She always loves to experiment. अच्छा. तो थाईलैंड में बैठ के मुझे पाकिस्तानी खाने की बिल्कुल याद नहीं आई. So that's been my routine, and I like that because I feel that I perform better. And I think carbs up end of the day बेशक ले लो, doesn't matter, पूरा दिन बेशक मत लो, end of the day ले लो, that'll help you recover better, and it'll get you a little slow obviously, but then that's good for you at night because it'll help you sleep. अगर आप दिन को कार्ब्स लेते हैं, आप स्लो होते हैं, यू वोंट बी एबल टू वर्क ऑल डे. आप जोर लगाएंगे स्टिमुलेंट्स के ऊपर, जो है ना, रिजॉर्ट करेंगे, यार मैं कॉफ़ी पी लूँ, मैं कोई प्री वर्कआउट ले लूँ. बट इफ़ यू, दिस व्हाट आई फेल्ट दैट इफ़ यू टेक कार्ब्स like post workout at dinner, the last meal of your night, it's gonna get you slow. All right, now I'm gonna go to sleep, and then you wake up fresh. Yeah, I agree. And that's the same thing that I said in my previous podcast. Okay, that's a trick that you can use for shift workers basically, ना, जिनकी night shift वगैरह है, and जिनको नींद अगर नहीं आ रही, तो जो last meal है, they have that a little bit of a heavy meal, थोड़े से carbs वगैरह खाए हो, तो थोड़ी सी उससे नींद induce आ जाती है. Exactly. Yeah. Ajay, Uloomi, I asked your brother the same question. I'm gonna ask you the same one as well, but with a story as well. Remember back in A levels, I won't name anyone, but this friend of mine, he told me कि यार मेरा ना फटा हो गया ना, मेरा फटा हो गया आज, तो क्या नाम है, अकेडमी में फलां से फटा हो गया, वो बंदे शंदे बुला रहे हैं, तो मैं जो ना, मैंने उलूमी को बुलाऊंगा. मैंने कहा अच्छा सही है. अच्छा, एट दैट टाइम आई हैड हर्ड दैट यू नो हाउ टू फाइट. इतना डिटेल में नहीं पता था. इस साल पता था कि अच्छा उलूमी तो वो है यार जो बैंड में है, ब्रेक डांस करता है, ये इस तरह की चीज़ें पता थी. मैंने कहा अच्छा पता नहीं, ठीक है. सो आफ्टर द फाइट ही टोल्ड मी कि यार पता नहीं बड़ा क्रेजी सीन हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रही थी. बट देन आई सॉ कि उलूमी जो है वो किसी बहुत बड़े बंदे पे चढ़ा हुआ, पीछे से चढ़ा हुआ है, एंड ही हिलेंगे और वो बंदा गिर गया. तो आई लाइक हैं, कहते हैं हाँ यार उसको प्रॉपर फाइट करना आता है. मैंने कहा अच्छा क्या सीन है. सो माई क्वेश्चन बेसिकली इज विद द स्टोरी कि व्हाट इज द मार्शल आर्ट दैट इज द मोस्ट यूजफुल in your perspective in a real life fight जिसमें crazy scene हो रहा है, कोई यूँ आ रहा है, कोई यूँ आ रहा है, उसमें कौन सा मार्शल आर्ट सबसे काम आता है अपने आप को सेल्फ डिफेंस के लिए? After training in Thailand, पहले मुझे लगता था कि यार कोई मार्शल आर्ट्स काम नहीं आएगा या पता नहीं क्या होगा, because everything depends on the situation. अभी अगर आप कोई लेफ्ट राइट से आपको पत्थर कोई फेंक रहा है तो वो अलग बात है, क्योंकि यहाँ पे पत्थर फेंकने का रिवाज है, चीज़ें फेंकने का रिवाज है. So that's a different story. Okay. The story that you mentioned उसमें ये था कि we were fighting like hand to hand. Hand to hand combat में भी दो फिर टाइप्स आ जाती हैं, या तो आप डिस्टेंस पे हो या तो आप बिल्कुल जुड़े हुए हो. फिर तीसरी जो
ऑलमोस्ट एक चीज़ होती है जिसमें आपको कहते हैं लिटा के हमने लाते मारी उसको, लिटा के सही पिटाई की है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? सो इफ़ यू आर स्टैंडिंग अप एंड अप क्लोज, उसमें आई थिंक मुay thai इज़ द बेस्ट वन, बिकॉज यू हैव ऑल योर 8 limbs जो आपके प्रॉपर सॉलिड जॉइंट्स जो हैं बॉडी के, यू यूज ऑल ऑफ देम, राइट? द सॉलिड बोन्स यू कैन यूज टू डू अ लॉट ऑफ डैमेज. उसके बाद अगर आप क्लोज रेंज में हो तो उसमें भी वो काम आता है, आप लॉन्ग रेंज में उसमें भी क्लोज रेंज में भी काम. लाइक इफ यू आर स्टैंडिंग, मुay thai is the art, I would say. Right. But when you're on the ground, then of course it's jiu-jitsu. Right? You're on the ground, but again, if it's one person and it's jiu-jitsu, you cannot. अक्सर ऐसा होता है कि I remember there was a big fight और हर कोई एक दूसरे को मारा, समझ नहीं आ रही कौन किसकी तरफ से आया, लड़ने के लिए बस मारी जा रहे हैं. And I saw एक जिसको मैं जानता था, उसको कोई लड़का उसको मारा था, and I went and I choked him from the back, and not to beat him or anything, just to peel him off, कि de-escalate करो सिचुएशन को. उसको पकड़ा, choke करके, I just put him in a choke and I just started walking back, and everybody saw that and they just stopped for a second कि ये क्या हो रहा है. Like, oh shit, so he knows what to do. Exactly. So he was like आवाजें आ रही है, he's trying to tap and all. I'm like, no, don't, stop, don't struggle, you'll fall asleep. And then everyone was like, half of them went back to fighting and half of them are still looking at me like, what is he doing? And the guys, obviously when you put someone in a choke, the carotid arteries से जो है ना blood supply रुक जाती है, your face starts turning red, pink, and then it just turns blue. So when he started turning blue and purple, or he just went limp, so everyone was like, holy, what the hell happened? I dropped him, वो गिरा, उसके बाद आधे लोगों ने लड़ना छोड़ दिया. So that situation was to de-escalate whatever was happening. If I wanted to fight, पीछे से जाके उसको मार देता, obviously. That was a different thing. So situation पे depend करता है. आजकल तो वो situation रही नहीं ना कि आप लड़ोगे. कुछ भी होता है, बच्चे जो है ना गाड़ी चला रहा होता है, you honk a horn, जगह दे दो, and he just pulls out a gun on you. उसका सबसे बेस्ट सेल्फ डिफेंस ये है कि I am sorry. मुझे उस दिन भी किसी ने जिम में पूछा कि यार गन का सेल्फ डिफेंस क्या होता है, some big bodybuilder dude, गन का सेल्फ डिफेंस मैंने सीखना है. मैंने कहा उसका एक ही सेल्फ डिफेंस है, माफ करो. Very realistic. कसम से ऐसे ही है. I was like, bro, the bigger your muscles, doesn't matter how big your muscles are, doesn't matter how good of a fighter you are, all he has to do is this. Right? This, इसमें आधा सेकंड में नहीं लगता. और आप ये सब जो दिखाते हैं कि जैसे हैया करके ये करेंगे वो करेंगे, that thing takes forever. Yeah. So you do this, वो मीम नहीं आया हुआ कि वो gun trick सिखाते हैं, he does all of that and then the guy tries and he goes into the heavens के वही होने वाला है इनके साथ. So again, if it's hand to hand combat, up close, I think personally मुझे लगता है कि Muay Thai is the best one. But ultimately I've seen boxers do a lot of like really good too. Taekwondo वालों ने भी बहुत अच्छा किया है. So this is why I think mixed martial arts was born. It was not about the style that is perfect. It's about the fighter that puts the styles together, or whatever style is perfect. Whatever the style is, the perfect fighter will always make their style win. I've seen a lot of kickboxers win from Muay Thai guys. Muay Thai guys succeed in mixed martial arts. Jiu-jitsu guys succeed in mixed martial arts. So कोई fixed style नहीं होता. Any person who can adapt to every single thing. Now Stamp Fairtex जो हमारी team की superstar, she's a 3-sport world champion, kickboxing world champion in 1 championship, Muay Thai world champion 1 championship, and now MMA world champion. So obviously kickboxing Muay Thai करने के बाद उसने MMA किया है, and no one can beat her. At this point, only one girl had beaten her, and उसके अलावा I think she's beaten everyone. Right. So you can say Muay Thai supremacy, but then again, she has good wrestling defense. She knows how to work the wrestling. She knows how to work jiu-jitsu. She's submitted a lot of girls. So she's used her jiu-jitsu as well. So it's based on the fighter or the person. I had Sir Jalal on the podcast as well. Taekwondo के जो sir हैं. Sir Jalal? Yeah. So he said the same thing. He said कि जिसने पटाई करनी है ना, उसने पटाई करनी है. करनी है. हाँ. And I've seen a lot of fighters. कुछ events में जहाँ पे fighters को देसी लोगों ने, मतलब देसी, I mean like the guys who are not trained, उन लोगों ने उनकी पिटाई की है. Like outside the ring कोई लड़ाई हो गई, केज में कुछ मसला हुआ, बाहर गए लड़ाई हो गई, तो फाइटर को बाहर से जो लोग थे जो साथ देखने आए थे, उन्होंने कहा इसको जरा हम फेंटी लगाते हैं, और फेंटी लगा भी दी है. अच्छा, 1-on-1 में? I think so. I'm not sure about that. But that's what I've heard. So there's that can happen to an untrained guy. Can beat a trained guy if he knows how to fight. Basic know-how है, basic को sense है, and fighting is also ये नहीं है कि मतलब हम टेक्निक सीख जाएंगे तो लड़ना आ जाएगा. No, you need to have that
वो लड़ने वाला एक चाहिए होता है, हम उसको बोलते हैं ना खराट दिमाग चाहिए होता है कि यू नीड टू हैव दैट, आई वांट टू फाइट, आई एम गोना फाइट. सो इफ यू डोंट हैव द इट फॉर फाइटिंग, फिर you can't fight. जितना मर्जी आप कोशिश करो, जितने भी fighters, like all these big names that you see in the world, they are all of them are troubled kids. या कोई bully हुआ या किसी ने bully किया, या जो Sean Strickland आजकल काफ़ी famous हुआ था in the UFC middleweight champion. He's like, my dad used to beat me up, so that was my conditioning. और वहाँ से जो है ना मैं MMA में आया, and I used that energy, channeled that energy into this, and I became a world champion. He beat Israel Adesanya. Who is one of the world's best kickboxers, and like one of the greatest of all time type scene है उसका. अच्छा. उस बंदे को इसने stand up उसी की game में हराया. And he said this, I'm like, he's skill wise he was not superior than Israel Adesanya. Right. But then again he had the dog in him. He just kept pushing forward, brought the fight to Israel Adesanya, and he won the championship belt. Right. 5 rounds. He was just like going on. Good thing that you mentioned the mindset, because remember we were talking about this. Abhi 2018 mein you had this fight in it was in the Philippines. It was in Lahore. Actually, it was in Lahore. It was a Filipino basically. Yeah. Just basically like it felt like you're just about to lose. You somehow covered up. You somehow, or shout out to the referee as well. उसने fight वहाँ रोकी नहीं. He saw कि अच्छा नहीं थोड़ा सीन है इस boy का. He's moving. कुछ कर रहा है. He's alive. जिंदा है. And then you turned things around, and KO, TKO था कि KO था? No, it was a decision against me, but then first round was his. अच्छा, सही. Second round में whatever, so the end of first round when I came back, obviously once you get a knockdown तो 10-8 automatically score हो जाता है score card पे, क्या आपने knockdown किया. ठीक है. I came back, मैंने मारा उसको काफी, लेकिन obviously knockdown नहीं था तो it didn't go 10-8. सही. So that was his round. Second round I came back, I took him down. I knew that okay, close range में मैं अच्छा लड़ रहा हूँ. फिर मैंने range distance close किया, I took him down, threw elbows, beat him up on the ground. Now he knew that okay, I am good on this at long range. This guy is good in close range. He tried to keep the range, and he just trying to run away. Yeah. Every single time I tried to shoot on him and tried to take him down, he didn't let me. Or I shot on him once. I saw the fight. क्योंकि fight में जो था मुझे कुछ याद नहीं था. So I shot on him. He stuffed my takedown, और फिर उसने मुझे push किया तो I fell back on my back, so that was a takedown scored for him. So obviously वो भी जो है ना उसके लिए फिर advantage हुआ, that so he scored 2 rounds basically. So it was a decision against me. अच्छा, you ended up losing that fight? I lost that fight. Yeah. Okay. So Brave Combat Federation, जहाँ से UFC के लिए लोग UFC के लिए जो एक talent pool बना हुआ है वो, that was the promotion. They came to Pakistan. They wanted to do a show in Pakistan. And I was the co-main event. But people's main event because of whatever happened. That was a crazy night. So what happened, like when you were about to get knocked out, अपने आप को बचा लिया, फिर जब वो राउंड खत्म हुआ, ज़हन में क्या चल रहा था उस वक्त? I don't remember anything. You don't remember anything? I have the last thing I remember of that fight is the guy is like rushing, which was like the mid first round जो मैंने वीडियो में देखा. The guy is rushing onto me, like बढ़ के punches मारा, like moving back. और the last thing I remember is my back hitting the fence. अच्छा. जो मैं time वगैरह देखा तो it was like 240 250 something रहता था, like under 3 minutes time था. That is when I was trying to block like this, and he caught me at the back of my head, like behind my ear. He caught me in the temple, और I wobbled. उसके बाद मुझे कुछ नहीं याद. Oh. फिर जो भी हुआ that was all autopilot. Oh shit. So मेरे कोच मुझे कहते हैं कि तुम्हें याद है तुमने मुझे, so after the fight मुझे आहिस्ता लाइट आंख में लग रही थी. क्या annoying लाइट है, क्या हो रहा है, अच्छा खासा सो रहा हूँ, पता नहीं किसने लाइट ऑन कर दी है. फिर मुझे याद है oh shit, I was fighting. Shit. ये तो मैं फाइट लड़ रहा था, सो कहाँ से गया. फिर मैंने कहा oh shit, did I get knocked out. फिर मैं देखा, मुझे अजीब सा लगा because one eye was shut. It was completely shut. ऐसे सूज गई थी. I had like 11 hairline fractures in the orbital, और एक बड़ा फ्रैक्चर हुआ था यहाँ पे. अच्छा. हाँ. अच्छा. So I was just shocked. यार हो क्या रहा है? Like why is everyone around me? I was in a fight. मैं पीछे कहाँ से आ गया? Because we were like in the changing room again. पर मेरे सारे teammates मुझे देख रहे हैं. मैंने क्या हो गया सबको? I'm fine. मैंने देखा, मेरे कपड़े चेंज किए. मैंने कोच को पूछा, मैंने कोच कपड़े कैसे चेंज कराए मेरे? मजाक में कहते खुद तूने चेंज किए. मैंने come on coach, don't mess with me. He's like check your bag, you've packed it your way, because I have an OCD for packing things. अच्छा. तो मैंने बैग खोल के देखा तो जिस तरह मेरी पैकिंग का जो मेरा तरीका उसी था. अच्छा. And I was like, because I'm like a person, एक फोल्ड भी गलत हो गया मुझे नजर आ जाता है.
ये तो मैंने नहीं किया. Someone has tried. And I saw everything, like I've done that. I'm like, who took my hand wraps off? It's like, you told them that you want your hands, free, तो hand wraps काट दिए. मैं ये कब हुआ ये सब? तो फलाना बंदा तुमसे मिलने आया, ये तुमसे मिलने आया, तुम उनसे खड़े होके गले मिल के थैंक यू करते मिलते रहे, तुम्हें नहीं याद? I'm like, I don't remember anything. अब सबने कहा, oh my god, this is concussion. तो I was about to say that. I was like, हुआ क्या फाइट में? कहते हैं यार तुम बहुत अच्छा लड़े. मैंने कहा दिल रखने के लिए मत बताएं, सच बताएं फाइट में क्या हुआ. कहते तुमने सही मारा उसको, दिल खुश कर दिया. You lost but you've made us happy. अब मुझे वो हुआ कि they're trying to just keep my morale high कि यार बुरा ना लगे इसको. मैं कहा मैं नहीं मानता. फिर मैंने कहा कुछ अजीब लग रहा है. तो कोच का मैंने फ़ोन उठाया, उसका वो स्क्रीन में मैंने देखा मेरी एक आंख बंद है. I'm like, what is this? I look like a zombie. So I was like, खोलने की कोशिश कर रहा हूँ. कह रहा नहीं कोशिश मत करो. Doctor said don't open it. It's going to take at least a month to open. Like, a month? A month to open because there was like the fracture was severe and it was like shut and swollen. अच्छा. I'll show you the picture afterwards. So I was like, this is impossible कि इतना मुझे डैमेज हुआ है और मैं नॉकआउट नहीं हुआ. ये कैसे हो सकता है? तो कहते हैं यार तुम बहुत अच्छे लड़े. सब मुझे बताने की कोशिश कर रहे थे. फिर मुझे समझ नहीं आया क्या करूँ क्या ना करूँ. बस सर झुका के बैठा हुआ था. कि that was the co-main event. मेरे बाद एक ही फाइट थी अंदर. तो सब ने कहा हमने वो देखनी नहीं है फाइट, हम तुम्हारे लिए आए थे. Everyone's around me like you're the best bro, you're the best. I'm like I'm just gonna wait for the fight video. Obviously कोई ना कोई हेटर ही सही लगाएगा ज़रूर कि उलूमी इस तरह नॉकआउट हुआ था. So I waited for a video. वहाँ से हम होटल जा रहे थे, बस में थे. तो मैं बैठा, so sad. I made a video, said thanking my sponsors and thanking the people for the support. I made that video, I posted on my Instagram story and I was just sitting there. बस रुकी तो मेरे साथ कोच सुल्तान बैठे हुए थे. तो मैंने क्या हुआ है? कहते हैं बाहर लोग तुम्हें मिलने आए. मुझे लगा मजाक कर रहे हैं. मैंने कहा यार कोच क्यों मजाक करते हैं, वैसे ही दिल ख़राब है. कहते उधर देखो. मैंने यूँ देखा, like people have Uloomi के posters बने हुए हैं, right? And they're like Uloomi, come on, we want to meet you. And I'm like, wait, really? And the driver's like, sir जाएं सर, आपने बड़ी अच्छी फाइट लड़ी, आपको जो है ना मिलने आए हैं. Even the bus driver said that. और सारे फाइटर्स बैठे थे, ब्लू कॉर्नर था, रेड कॉर्नर था, कौन सा था, ब्लू कॉर्नर के, वो सारे पीछे बैठे थे. लाइक गो ब्रो, इट्स ओके विल वेट. वो सारे आके बस के इर्द गिर्द लोग जमा हो गए दरवाजे के पास. दे लाइक बैंगिंग ऑन द डोर, दे ओपन द डोर. तो कोच ने उनको इशारा किया पीछे हो जा, हम आ रहे हैं. जब पीछे हो गए, जैसे मैं आया, कोई इधर से पकड़ रहा है, कोई इधर से पकड़ रहा है, कोई इधर पप्पियाँ दे रहा है, कोई इधर. तो लाइक easy my head hurts, take it easy, thank you but take it easy. So everyone was like kissing me on my forehead and hugging me and shaking hands with me. मैंने कहा यार वाकई में फिर कुछ हुआ होगा. अच्छा. खैर बस में बैठे, पहुंचे होटल पहुंचे तो my dad called. I was like, oh shit, I don't want him to know. तो मैंने आधा मुंह दिखाया कि कोई थोड़ा जख्म हुआ था. मैं यूँ देखा और I was acting as if मैं बात कर रहा हूँ, not playing. जी अबू कैसे हैं आप? हाँ अस्सलाम वालेकुम. हाँ. My dad's like, पूरी शक्ल दिखाओ, हमने तुम्हारी फाइट जो है ना टीवी पे लाइव देखी है. ARY was broadcasting it live. अच्छा. I was like, really? He's like, तो उन्होंने बताया, कहते हैं ARY पे हम पूरी तुम्हारी फाइट शुरू से आखिर तक लाइव देखी है. I just want to see if you're okay. तो मैंने, that's when I turned the entire thing and that's when I saw my face. I was like, oh, it's a mess. यहाँ से कोई मेरे ख्याल से 2 जगह से थोड़ा सा गोश्त चिप ऑफ हो गया था. यहाँ पे जख्म थे. अच्छा, तो अच्छा. यहाँ पे उन्होंने मुझे फर्स्ट एड के लिए कोई वो लगाई हुई थी, गोल नहीं होती सिनीप्लास्ट, वो लगाई थी, वो भी उतर गई थी. My eye was completely shut. My dad's like, I can't look at this man, no. And then my mom was like, that was the moment when that was the best moment of my life, I would say. My mom was like, कोई बात नहीं, इतने टाइम तुमने इतने माओं को रुलाया, इतने लड़कों को मार के, एक दिन तुम्हारी मार हुई तो क्या हुआ? I was like, this is the best thing for any son who is in this sport. And मैंने कहा चले बस मैं अभी हॉस्पिटल जा रहा हूँ, फिर मैं आपको जो है ना कॉल करता हूँ. इतने में वाकई में हमें कॉल आई कि यार वो जो आपका फाइटर था उसको हॉस्पिटल लेके आए. So what happened was, after the first round, the doctor came in during the fight and he's like, how many fingers are these? And I couldn't see. तो मैंने कहा I don't know. तो कहता we'll have to stop the fight. ये रॉकी वाला सीन है. रॉकी वाला. तो ये नहीं हुआ कि वो टैप करके बता रहा है, वो नहीं था. उसने कहा ये कितनी उंगलियां हैं. उसने कहा follow my finger. Can you see it? मैंने कहा हाँ, क्योंकि वो ये करते हैं कि वो चेक करते हैं कंकशन अगर है तो फॉलो नहीं होता. तो कहता ठीक है फॉलो कर. कहते ये कितनी उंगलियां यहाँ पे रखे ना, मेरी आँख बंद थी. तो I was like I don't know. So he's like we'll have to stop the fight. You can't see. मैंने उसको गाली दी. मैंने कहा your mom. Oh shit. If you stop this fight. मैंने कहा तुम बाहर निकलोगे मैं तुम्हें देख लूंगा. कहता यार मैं तो I'm worried about your health. I'm like you're not going to stop this fight. फिर बाहर से मेरा भाई भी चीखा you're not going to stop this fight. Like that's what I heard afterwards. And then so ये तब मुझे पता चला जब मैं
हॉस्पिटल गया, उसी डॉक्टर ने फ़ोन किया, मैं हॉस्पिटल गया तो आया, सर आ गए आप फिर से? मैंने कहा फिर से? कहते हैं सर आपने तो मेरी माँ बहन कर रही थी केज के अंदर। आई वाज लाइक आई एम रियली सॉरी, आई डोंट रिमेंबर व्हाट हैपेंड। कहते हैं सर ये तो फिर सीवियर केस है कंकशन का, कुछ भी नहीं याद। मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं याद फाइट में क्या हुआ है। आई एम रियली सॉरी इफ आई हर्ट योर फीलिंग्स और सेड समथिंग रॉन्ग। इज लाइक कोई बात नहीं, हम न्यूरो को बुलाते हैं, मशीनें ऑन की, MRI करो, CT स्कैन करो, डॉक्टर को बुलाओ, सारी जो ना हॉस्पिटल में आगे पीछे भागदौड़ लगी हुई है। स्कैन किया, कहते हैं आप किस मिट्टी से बने हुए हैं? मैंने कहा सर क्या हुआ? कहते हैं दिमाग में यूजुअली व्हेन यू गेट कंकस्ड देयर इज अ फ्लूइड स्टार्ट्स ओजिंग इन योर ब्रेन। कहते हैं कोई ना कोई फ्लूइड है ना कोई जो है ना, मतलब रिपोर्ट्स आर क्लियर जैसे कुछ हुआ ही नहीं है आपको। लेकिन आप कुछ याद नहीं है फाइट में क्या हुआ है। मैंने कहा बस ये थोड़ा सख्त है, क्या करें? कहते हैं दिस इज़ नॉट फनी, स्टे इन टच विद मी, अपना कार्ड दिया। कहते हैं कि स्टे इन टच विद मी, अगर थोड़ा सा भी आपको सर में दर्द या उल्टी आने वैसे कोई सिम्टम्स हों तो यू जस्ट कॉल मी स्ट्रेट अप। आई वेंट होम, आई स्लेप्ट, आई वेंट टू द होटल, स्लेप्ट, वोक अप एट लाइक 2 AM 3 AM फ्रेश एज। इतना फ्रेश था, मुझे लगा कि मैं दोबारा फाइट लड़ सकता हूँ। That's when I looked at myself in the वो and I took a picture of myself. वो पिक्चर अभी तक मेरे पास पड़ी हुई है। फिर उसके बाद एक टीममेट ने मेरी कोई वीडियो बनाई थी, वो कोई रॉकी टाइप की ना, कोई हाईलाइट टाइप की वीडियो बनाई। तो उसने मुझे टैग किया, तो मुझे लगा कि टैग यू ने वीडियो आया, तो मैंने कहा हाँ लेट्स सी व्हाट हैपेंड। तब फिर मैंने वो फाइट देखी, क्या हुआ, लाइक ही चोज द बेस्ट मोमेंट्स व्हेन आई फॉल डाउन, और वो सब हुआ। फिर mid round I was telling people to make some more noise, the disbelief का bassist in me came out, and I was like let's go एक आंख बंद है जैसे जो इशारे कर रहे लोगों को। और वो फिर उसके बाद हुए second round went, तो वो सारा देख के फिर डिसीजन में उसका obviously उसका हाथ ऊपर था। I was like shaking my head and I was like don't boo this guy, you know, clap for him। तो वो commentators were like this is great sportsmanship, और ये वो जिस तरह से जो है ना the announcer was he interviewed me, और जिस तरह उसने respect दी, so वो भी मुझे याद नहीं था। मैं I spoke to the crowd, the announcer interviewed me, I gave an interview, I interacted with him, I interacted with the people, I told them that on the count of 3 you all are gonna say Jew, 1 2 3, पूरा crowd Jew बोल उठा, and I don't even remember I've done that। तो वो सब मैंने बाद में देखा, फिर मैं थोड़ा रोया। मैंने कहा यार I have a big heart, I have a big heart, I'm not gonna lie। So that was the moment I realized how big of a heart I have to fight, you know, I realized that I have a dog in me to fight। उसके बाद से फिर there was no turning back, then I was like till now, and इसीलिए मुझे लगता है कि I'll fight till 36 37 38, जब तक मुझे लड़वाना है मैं लड़ूंगा। But then again the body says something else, body is like हौसला करो भाई, अभी मेरे में इतनी capacity नहीं है कि 36 37 तक लड़ोगे, because I've had a lot of wear and tears, I pushed really hard in training, in my fights I give it my all, I don't leave anything behind, so obviously now I have to make that decision too। So what's your body saying these days, like in terms of के बस करो या हाथ रखो, क्या नजर आते हैं? बॉडी एक्चुअली ये कहती है कि रिकवरी पे ज़्यादा काम करो। क्योंकि the kind of injuries that I've had, so like 2 herniated discs in my cervical, उसके बाद मेरी जो है ना ribs में I think there's some sort of पता नहीं कोई अजीब सा नाम है, कोई fractures हैं। My shoulders are not very well, hips में कुछ issue है, और I had a torn hamstring taekwondo के time पे stretch करते हुए, जो कभी तक ठीक नहीं है, it always keeps on bugging me। ankles में issue है, but you know I'm just keeping on pushing। toes, hands are broken, you know अक्सर हुआ है, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, फिर जोड़ के सीधा कर लेते हैं। अच्छा, like dislocate हो जाते हैं इस तरह से? अच्छा। तो इंजरीज अभी बैक की इंजरी ज़्यादा होना शुरू हो गई because we wrestle a lot। तो obviously अभी now I need to see that how do I do the recovery। I do ice bath, hot and cold वाला कर रहा हूँ now। अब वो एक बॉडी उसकी यूज टू हो चुकी है, तो वो इतना अफेक्ट नहीं कर रहा। So now I have to see कि यार और मैं क्या कर सकता हूँ अपनी बॉडी को ऑप्टिमाइज करने के लिए। अच्छा, सही। तो like what are you thinking in terms of retirement? कुछ सोचा है कब तक करना है? कब तक का तो नहीं पता, because I was thinking that I'll do my title defense, उसके बाद I'll take retirement। लेकिन जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, I'm like यार अभी तो ऐसा लग रहा है अभी शुरू हुआ है। अच्छा। So I got 2022 में मुझे 2 दफ़ा UFC सिंगापुर के लिए कॉल आई थी। Obviously it was last week था, ट्यूसडे को मुझे कॉल आई कि भाई सैटरडे को फाइट है। मैंने कहा 5 दिन में मुझे वीज़ा नहीं मिलने वाला, और जितना वेट कट करने का बोल रहे हो वो इट्स नॉट वर्थ इट। तो आई सेड नो। फिर दूसरी दफ़ा दोबारा कॉल आई कि नहीं, हम वीज़ा काम पर करवा लेंगे, लेकिन यू हैव टू ईदर फाइट 61 किलोज और 70 किलोज।
I'm like, I'm 72 right now. 70 पे जो लड़ेगा वो 86 से कट करके आएगा. When I go in there, he's just going to throw one punch. That's all it's going to take. I mean, I can take a beating, but I don't want to go to the UFC just to go to the UFC, right? वो था उसके बाद last year 2023 में after I won the belt उसने काफ़ी शोर मचाया because Indian scene को बहुत ज़्यादा देखते हैं. UFC wants a lot of fighters from South Asian region now. Indo-Pak से उनको बहुत ज़्यादा जो है ना अभी fighters चाहिए, इसीलिए उन्होंने इंडिया की एक और जो है ना एथलीट को साइन कर लिया है. They already had Anshul Jubli. अभी उन्होंने पूजा तोमर को, she was the atomweight या something strawweight champion in MFN. जिस promotion में मैं हूँ. सही. वो उसमें champion थी. Now she's in the UFC. So I had a call twice for UFC Shanghai, जहाँ उनका contender series type होता है कि tournament है, you win the tournament, you're in the UFC. उसके बाद दोबारा UFC सिंगापुर के लिए मुझे फिर 2 calls आई. फिर US में एक उनका कार्ड था, उसके लिए मुझे कॉल आई. मैंने कहा भाई आपके वहाँ आने के लिए तो मुझे कम से कम 3 महीने पहले आपको बताना पड़ेगा कि 3 महीने लगेंगे मुझे, 2 से 3 महीने अप्लाई करने में, वीज़ा लेने में, उसके बाद मुझे 6 हफ्ते चाहिए होंगे कैंप करने के लिए. सो यू विल हैव टू बे विद मी. तो उस पर फिर ना हो गई. नाउ आई एक्सेप्टेड दैट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गेट अ वीज़ा और गेट टू द UFC लाइक दिस कि इतना आसानी से कुछ मिल जाए. लेकिन अभी एक और ऑफ़र आई है, which I'm going to announce of course on your podcast, that Karate Combat के जो मैं बात कर रहा था, Karate Combat is an up and coming in a very, it's not new but they just started getting viral because there's an American Pakistani, Asim Zaidi, he calls himself President Awesome, and Dana White से Dana Brown कर दिया because he's Pakistani. सही. So he owns a gym named Goat Shed. वहाँ पे एक पाकिस्तानी है जिसको वो यहाँ से 1 साल लगाया उन्होंने पूरा उसका वीज़ा प्रोसेस करने में, और यहाँ से उसको निकाल के वहाँ लेके now he's a superstar. He's had like 10 million views on his sparring videos, his fight videos. He's the next star. He's a very big name now. तो he's been fighting in Karate Combat. Shazeb Rind is his name. What's his name? Shazeb Rind. Okay. Yeah. All right. So he's fighting in Karate Combat now. From what I see, that उसको भी promote करने के लिए they're doing an India versus Pakistan feature fights in Dubai in April. तो they contacted me कि पहले आप February में हमारे साथ जो है ना Karate Combat Mexico में हो रहा है, UFC 300 नहीं UFC Mexico से 1 दिन पहले. Okay. Karate Combat का वहाँ पे इवेंट हो रहा है. तो उन्होंने कहा यहाँ पे आके पहले फाइट करें, उसके बाद हम अप्रैल में आपको दोबारा फाइट देंगे. इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होगा. सही. और it is going to be Dubai. And you have to be there because we want you to fight in that. सही. I'm just looking up right now. I'm just not ignoring you. फिर? तो उस पे फिर obviously I agreed on that. I was supposed to have my title defense in India. उसका वीज़ा वाला थोड़ा process थोड़ा सा time consuming है. So it's not going to happen. So I said yes to that fight. So now I have Karate Combat. Now the West is going to see how Kratos fights. तो वो भी जो है ना एक अलग वो एवेन्यू निकल आया है. So now that is another thing that is not letting me think about retiring so soon. Right. So are you training differently for that? Because you told me उसके rules different है ना कि भाई आप 5 सेकंड मिलते हैं आपको ground game के लिए. Striking तो बिल्कुल सेम है. Okay. Striking बिल्कुल MMA की तरह. I'll be striking the same way. I've trained Muay Thai, तो मैं थोड़ा Muay Thai को fuse करूँगा with my dash kickboxing style which I already have. और Taekwondo का यहाँ पे कोच शेर आलम है, कोच एहतशाम है. They have this style which is perfect for Karate Combat. So I am going to train here for that fight. यहीं पे camp करके इंशाल्लाह यहीं से I'll go fight. वहाँ पे सिर्फ the only thing that's different is there's no wrestling. You cannot like shoot and score a double leg और फिर उसके बाद ground पे किसी को maul करो. तो वो एक ऐसी चीज़ होगी जो कि obviously I would not be worried about, or it would not play to my advantage. But then striking, I love to strike. I love to like stand and bang. That's going to be there, so it'll be fun. And where will this be? This is in Dubai. Oh, this is going to be in Dubai. Nice. Because they want to do India versus Pakistan as well, and they want to, try to get to the Arab side of the world. Because अब देख रहे हैं UFC अबू धाबी आता है तो इतना पैसा इन्वेस्ट होता है उसके अंदर, इतने लोग आते हैं देखने के लिए. There's a lot of money in the Middle East or combat sport now. Yeah. So if they're like, okay, now we're going to do a show here. So they're going worldwide, and I'm glad they're doing this. Oh, Joe, timing, everything. Like I said, Allah is the best plan of them all. So my plan was कि यार मैं अपना टाइटल डिफेंस करूँगा, उसके बाद शायद रिटायर हो जाऊँ. Probably FATEX में कोचिंग करूँगा या पाकिस्तान में कोचिंग करूँगा. We'll see. And then this fight popped up. MFN वाली फाइट कैंसिल हो गई. ये फाइट उसी दिन मुझे मिली जिस दिन MFN वाली फाइट जो है ना it fell off.
अच्छा तो अच्छा सुबह मतलब ये था, सुबह मुझे कॉल आया कि यार हम, क्योंकि डेट पीछे हो गई, कहते पहले अप्रैल की डेट थी MFN की, उसके बाद उन्होंने कहा यार डेट मार्च की हो गई, ऐसा आई कैन नॉट फाइट इन मार्च, के वीज़ा मिलना मुश्किल हो जाएगा। वो हुआ, फिर शाम को मुझे इनका मैसेज आया कि हम चाहते हैं कि आप जो है ना अप्रैल वाले कार्ड में लड़ें दुबई में। लाइक परफेक्ट, आई एम ऑलरेडी ट्रेनिंग, आई विल डू यू नो एन एक्सटेंडेड कैंप, और पाकिस्तान में हूँ ऑलरेडी, पाकिस्तान में ही कैंप करूँगा, एवरीथिंग प्लेज आउट परफेक्टली। Nice. Looking forward to see you there, man. Inshallah, Fight. inshallah. Great. It was great having you, Uloomi. Thank you so much. And yeah, I don't know, I might call you again someday. For sure, अच्छी anytime. गपशप लगी. For sure. And for everyone else who's watching, thank you so much for watching. And we'll see you all in the next episode of the NSJD show. This is NSJD signing out. Allah Hafiz.